Some days back, I was sitting and thinking to myself, if I was a student, how would I want to prepare for the upcoming RBI examination? If I had 3-4 months left for the exam, what kind of timetable would I want to create for myself? And the moment I moved myself into the shoes of the students, it became difficult automatically to try and understand, okay, what kind of timetable do you think is perfect for you? And I also realized that before having a timetable in Excel, it is rather satisfying and confidence building to have a timetable on paper as well. In fact, in the last few days, whoever student has called me, the first thing that I've asked them is create a timetable and send it to me over WhatsApp so that I can understand how are you thinking. And surprisingly or unsurprisingly, majority of the students send me a timetable made on paper. So I realized, okay, before having you as a student move towards an Excel, because that is more advanced and more fruitful, it's important to create a timetable on paper as well. And that is why I thought, okay, let me first as a student create a timetable on paper for myself, thinking and assuming that I'm the one writing the exam in the next 4 months, and then I can probably reach out to the students and share that timetable so that I can tell them, okay, this is for me and this I know is going to work for me, so this can very well work for you as well. I will be sharing this timetable with you, do not worry about it. At the end of the video, I'll tell you how do you get access to it and how can you use it. Please do not skip whatever I'm going to share here, because otherwise you won't understand what is the philosophy and idea behind creating this timetable as a student by myself. Okay, so let's start. Now you can see on the screen the entire timetable that I've created. एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, पूरा simplify करूंगा. First of all, if I was a student preparing for the exam, I would want to list down the entire list of create an entire list of tasks that I would have to do in the next 3-4 months. मुझे क्या क्या करना है, assuming that the exam is going to be somewhere in August or September. So this is the entire list of tasks and it's very easy. बिल्कुल छोटे से स्पेस में मैंने डाल दिया. First of all, I would have to learn and understand, educate myself in finance, then management, then ESI. These are the 3 core subjects asked in phase 2. Then I would have to learn and understand quant reasoning English. When it comes to current affairs, Spotlight, RBI 247, PIB 247, and what I like to call topic-based current affairs, which includes reports, schemes, surveys of all kinds. And lastly, I would also want to take tests. I would have to take tests because otherwise I would be losing 20 to 30 marks very easily in both phase 1 and phase 2. So tests is something that is that goes along with all these subjects automatically. This is the entire list of tasks, major list of tasks that I have to do. When it comes with English descriptive, essay writing, answer writing, all of that becomes a part of tests. Okay. Now June 2024, I start by creating a timetable for this month, then July, and then August. Assuming that I have approximately 3 full months for the exam, I would want to give out June to a certain list of targets. Before moving with June, there are some assumptions that I am making for myself, and I would want the students also to list down the assumptions that they can make for themselves. So for myself, I know that I have done quant reasoning English before, and I can pick it up in August. I don't need to give it any time before August. Even if I pick it up in August and September will be good enough for me to revise and take many tests in quant reasoning and English. When it comes to current affairs, my assumption is I want to start with topic-based current affairs, give it 1 month, and then I want to move to monthly current affairs. This is my assumption. You need to put down your assumptions as well as a student, because only then you would understand, okay, these are the do's and these are the don'ts that I can keep in mind when I'm creating my own timetable. Now let's start with June. I have divided all the 3 months in certain shifts. Shift 1 is of 3 hours. Shift 2 is of 2 hours. I've kept in mind the amount of time that a working aspirant has, assuming that majority of the students are students who are already working in the bank, working in the IT sector. And if you're not a working aspirant anymore, that's an advantage for you because now you have more time. So instead of 5 hours, you have probably 7 hours. So you need not have another timetable. You can just expand this timetable, give yourself more time, cover everything faster.
And the third one is breakfast, lunch and dinner. This is very important for me because this is where I can squeeze out time and make more and more of every day. And this is a very focus oriented time as well, because when we have our lunch or dinner or breakfast, we tend to watch things. When we watch TV or watch news or watch anything like that, what happens is we are exhausting ourselves, number one, and secondly, we are losing focus from our primary task, primary objective, which is appear for and clear this examination. So this is a focus creating time that I want to use as an aspirant. And then there are Saturdays. I will explain to you how do I want to use my Saturdays. Okay, so June 2024, I have around 20 days, June 10th to June 30th. Shift 1 is of 3 hours. I would want to use it as an aspirant on finance because this is one of the most important areas. Now this is the sequence that I want to follow. I want to cover PDFs. Simultaneously, I want to look at previous year papers. This is the previous year paper for phase 2. You have something similar for phase 1 as well. It's available on Amazon. I would want to use it as an aspirant on a daily basis because I know it gives me the right direction. And I would want to use videos. If I've taken a course, then I would want to use the videos at the end because I don't have that much time. I have to cover finance in a matter of 20 days. If I had taken a course 6 months back, I would have loved to watch all the videos and get all the information that I could, all the education and information from the teacher. But as an aspirant now, I would not want to do that unless it is necessary, unless I'm not able to understand through the PDF. So if I'm not able to understand through the PDF, then I would want to go to the videos, otherwise not. So this is the sequence that I would want to follow as a student so that I'm able to maximize my efficiency, minimize the time taken to cover every subject because I have to then revise also. I cannot keep studying finance for 1.5 to 2 months anymore. That is not possible. Okay, moving forward. Shift 2 is of 2 hours, includes management because this is the second most important subject when it comes to clearing your examination. Again, 20 days, starting with PDFs and previous year papers and going to videos only where it is necessary, only where I'm not able to understand the concept. How would I want to use as a student breakfast, lunch and dinner time? In these 20 days, I would want to cover topic-based current affairs and I would pick up one report at a time, complete that report and then move on to the next report because I know if I pick up 2-3 reports, I will get confused, I will not be able to understand anything. And because a lot of questions come from topic-based current affairs, therefore, having that realization through previous year papers, I recognize and I make a decision that I would cover one report at a time and breakfast, lunch, dinner is the best time to be able to do that. I'm squeezing out time where it does not exist for me. How would I want to use my Saturdays? One day every week. This will go on forever till the examination is held. I would take 2 tests. Test 1, 8 a.m. to 8:30 a.m., 30 questions, 30 minutes, either a finance test or a management test depending upon how much have I studied in the last 1 week. I can create my own test because I have books at my disposal. I have some courses जिसमें chapter wise test भी दिए हैं, sectional test भी हैं, revision test भी हैं. I can use all those tests and create a nice test for myself containing 30 questions, 30 minutes में करूँगा. उसके बाद I'll take some rest and then analyze the entire test in 2 hours. इसमें हो सकता है 1 घंटा लगा हो सकता है 2 घंटा लगे, हो सकता है मुझे 3 घंटा लगे. It doesn't matter. I'm just segregating and giving myself specific time to analyze the test. That is very important for me because मैंने टेस्ट में परफॉर्म कैसे किया मुझे पता होना चाहिए, कहाँ पे मैंने गलती की मुझे पता होना चाहिए. That is even more important than writing the test itself. So I want to dedicate more time to analysis. Then I would take some rest, have my lunch and sleep for a while, and then I would sit for another test, test 2. This would contain 4 questions, 90 minutes. इसमें मैं आंसर राइटिंग करूंगा बिकॉज राइट नाउ आई एम डूइंग फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, तो मैं उनकी आंसर राइटिंग करना चाहूंगा. मुझे तो पता लगे यार मैं आंसर राइटिंग कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. देन आई वुड एनालाइज इट. आई वुड स्पेंड 2-3 आवर्स ऑन एनालाइजिंग द टेस्ट कि मैंने कितनी खराब या कितनी अच्छी आंसर राइटिंग की है. आई कैन वेरी वेल टेक सम सैम्पल आंसर्स. मैं AI भी यूज कर सकता हूँ, चैट GPT यूज कर सकता हूँ. आई कैन आस्क द सेम क्वेश्चन, लुक एट द आंसर एंड देन कंपेयर माय ओन आंसर. बहुत आराम से एक डिसेंट एनालिसिस आप कर पाओगे. ओके, मैं भी ये करना चाहूंगा एज अ स्टूडेंट. जस्ट राइटिंग द टेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी सैटिस्फाइंग फॉर मी बिकॉज मुझे पता है कि यार मैंने एनालिसिस तो किया ही नहीं, इस टेस्ट का फायदा क्या टेस्ट लिखने का, तो इसलिए मैं एनालिसिस करना चाहूंगा.
दैट इज ऑल व्हाट आई वुड डू इन अ सैटरडे। तो ये मेरा जून का बेसिक टाइम टेबल हो गया जिसको मैं डेडिकेटेडली फॉलो करूंगा। जब मैं जुलाई में आऊंगा तो मेरा ऑलरेडी फाइनेंस मैनेजमेंट खत्म हो चुका है। Therefore, now I would look at the most important activity remaining. Topic based current affairs शायद मैं 20 दिन में कंप्लीट ना कर पाऊं, so I'm giving myself 10 more days to cover topic based current affairs. Again, one report at a time. मैं चाहूंगा कि मैं एक रिपोर्ट उठाऊं, उसको खत्म करूं अच्छे से, तभी उसके बाद आगे चलूं। ओके, शिफ्ट 1 ये मेरा टारगेट होगा। शिफ्ट 2 जो 2 घंटे की है, विच इज गोइंग टू बी अ स्मॉलर शिफ्ट, उसमें आई वुड वांट टू पिक अप इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिससे कि मेरा पूरा फेज 2 खत्म हो जाए। बिकॉज एज अ स्टूडेंट आई वुड नॉट वांट टू टेक दैट हेडेक कि आधा फेज 2 हो गया, अब फेज 1 पे आ गए, अब आधा फेज 1 हो गया, अब फिर से फेज 2 पे आ गए। वो जंप नहीं करना चाहता मैं, इट वुड बी टू मच। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाऊंगा, पीडीएफ उठाऊंगा। आई वुड ट्राई नॉट पिक अप वीडियोस बिकॉज दे आर टाइम कंज्यूमिंग, नंबर 1, एंड सेकेंडली ईएसआई में सिलेबस से कम क्वेश्चंस आते रहे हैं इन द पास्ट 4-5 इयर्स, तो मैं चाहूंगा कि मैं कम टाइम दूं, इसलिए मैंने 10 दिन दिए हैं। 10 दिन में शायद ना कंप्लीट हो, 4-5 दिन और लगा सकता हूं। आई वुड हैव दैट बफर पीरियड। ये मेरी 2 शिफ्ट्स हो गई 10 दिन की फॉर जुलाई। उसके बाद मेरी जुलाई 31 टू जुलाई 11 टू जुलाई 31 आएगी, जो बाकी 20 दिन बचे हैं उसमें मैं क्या करूंगा। अब अगर एग्जाम मेरा सितंबर में है तो मुझे 3 मंथ की स्पॉटलाइट करनी है, 6 मंथ की RBI 247 करनी है एंड 6 मंथ की PIB 247 करनी है। तो आई वुड वांट टू कवर दिस 1 मंथ एट अ टाइम, कि पहले मैंने 1 महीने की RBI 247 उठाई, पूरी कवर करी, एंड देन आई मूव टू PIB 247, देन आई मूव टू समथिंग एल्स। तो ये मैं चाहूंगा, आई वुड वांट कि ये 20 दिन में मैं मेजॉरिटी ऑफ दिस टास्क कंप्लीट कर लूं। आई नो पूरा नहीं हो पाएगा, बट आई वुड वांट टू स्टार्ट दिस प्रोसेस। तो शिफ्ट 1 of 3 hours, which is the most important, now I would want to give that shift in July to covering current affairs, hardcore current affairs, other than topic based current affairs, जो मुझे पता है एग्जाम में it is going to create a difference. शिफ्ट 2 जो है, जिसमें मैंने 2 घंटे ESI को दिए थे, जब मेरी वो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं अभी आई डोंट वांट टू पिक अप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, बिकॉज आई नो मैंने assumption बनाई थी that I've already read it once, so I want to pick it up in August only. तो जुलाई मेरे पास बफर पीरियड है। अब इस बफर पीरियड में ऐसा क्या करूं जिससे आई कैन मेक अ डिफरेंस एंड आई कैन बी बेटर देन अदर स्टूडेंट्स आउट देयर। मैं रिवीजन करना चाहूंगा फाइनेंस मैनेजमेंट का, एक्टिव रिवीजन करूंगा और प्रीवियस ईयर पेपर्स दोबारा देखूंगा यूजिंग दिस बुक, क्योंकि मुझे पता है यार ये प्रीवियस ईयर पेपर्स आर गोइंग टू बी अ मेजर फैक्टर इन डिफरेंशिएटिंग माई सेल्फ फ्रॉम द अदर एस्पिरेंट्स आउट देयर। तो मैं एक्टिव रिवीजन करूंगा। एक्टिव रिवीजन इन फैक्ट इफ यू डोंट नो, यू कैन गो ऑनलाइन, यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो, मेरी वीडियो मिल जाएगी आपको एक्टिव रिवीजन की। आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स आल्सो। तो मैं ये 20 दिन आई वुड वांट टू यूज ऑन रिवीजन ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जिससे जो छूट गया है वो कवर हो जाए। Whatever I've already covered, I get an idea also how much do I remember. I want to have that reality check as a student regularly. फिर उसके बाद मेरा बचा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। उसमें मैं क्या करूंगा, जून में तो मैंने टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स उठाया था बिकॉज आई वांटेड टू कवर दैट एज फास्ट एज पॉसिबल। अब मेरा वो कवर हो गया। नाउ आई वुड वांट टू पिक अप RBI 247, PIB 247 एंड स्पॉटलाइट। ये मेरा जुलाई 1 से जुलाई 31 तक पूरे महीने चलेगा। और यहाँ पे मैं चाहूंगा एज अ स्टूडेंट आई वुड वांट कि पहले मैं एटलीस्ट मंथली कवर करूं, डेली ना देखने से पहले मैं मंथली कवर कर लूं। मंथली अगर मैं ऑलरेडी कवर कर पा रहा हूं, आई हैव इनफ टाइम, तो मैं इस टाइम पे डेली देखना चाहूंगा। जो भी मैं आपको डेली पढ़ाता हूं, जो भी मनीष सर पढ़ाते हैं, वो मैं देखना चाहूंगा। फिर आ जाता है सैटरडे, विच इज 1 day एवरी वीक। यहाँ पे भी आई वुड वांट टू कंटिन्यू विद द टेस्ट, बिकॉज जब तक मैं रियलिटी चेक नहीं लूंगा रेगुलरली टेस्ट के थ्रू, मुझे पता ही नहीं है इंप्रूवमेंट क्या है, डिप्रूवमेंट क्या है। तो टेस्ट 1 8 AM to 8:30 AM, फाइनेंस मैनेजमेंट ESI कोई भी एक बना सकता हूँ, 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स। फिर एनालिसिस करूंगा, उसके बाद आंसर राइटिंग करूंगा और उसका एनालिसिस करूंगा, एग्जैक्टली द सेम एज आई डिड इन जून। मैं फेज 2 पे फोकस कर रहा हूँ जून और जुलाई में, फेज 1 पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार अगस्त में मैं फेज 1 खींच लूंगा, मेरे को उतना आता है। अब अगस्त में टाइम टेबल पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जून और जुलाई में तो मैंने पूरा मंथली या 10 दिन 20 दिन इस तरह से डिवाइड किया था। यहाँ पे मैं ऑल्टरनेट डेज के बेसिस पे करना चाहूंगा। व्हाई? बिकॉज अगस्त सितंबर मेरे पास 1.5 से 2 महीना है। मैं आई वुड वांट एज अ स्टूडेंट कि मैं 15-20 टेस्ट तो लिख के जा रहा हूँ। तो अगर मैं ऑल्टरनेट डेज पे एक टेस्ट लिखूंगा या 3 दिन में एक टेस्ट लिखूंगा, तभी मैं टास्क कंप्लीट कर पाऊंगा। ऑल्सो मैंने ये रिस्क लिया कि मैंने अगस्त से पहले क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं उठाया, तो अब मैं चाहूंगा कि मैं इतने टेस्ट लिखूं दैट आई एम वेरी वेल read and also I am very well practiced in quant reasoning English.
तो उसके लिए मुझे रेगुलर टेस्ट लिखने पड़ेंगे। तो मैंने डे वाइज, अब ऑल्टरनेट डे वाइज मैंने टाइम टेबल बनाया अपने लिए। डे 1 को मैं फॉलो करूंगा, ऐसे ही ये डे 3 को फॉलो होगा, डे 5 को फॉलो होगा, और उसके बाद डे 2, डे 4, डे 6 उसमें अलग तरीके से फॉलो होगा। तो ये ऑल्टरनेट डेज बेसिस पे मैंने बना दिया। डे 1 में शिफ्ट 1 3 आवर्स, इसमें मैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठाऊंगा, 3 घंटे अच्छे से जम के प्रैक्टिस करूंगा, पूरे महीने करूंगा मैं ये काम, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस फिर से हो जाए। शिफ्ट 2 जो कि 2 घंटे का है, उसमें मैं फाइनेंस मैनेजमेंट ईएसआई में से एक सब्जेक्ट उठा के रिवाइज करूंगा। 10 दिन में आराम से एक सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो, 30 दिन में तीनों सब्जेक्ट फिर से रिवाइज कर पाओगे। याद रखना है, मैं करना चाहूंगा एक्टिव रिविजन और प्रीवियस ईयर पेपर्स को साथ में रखिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में अब क्योंकि मेरा एक 1 मंथ एट अ टाइम वाला शायद पूरा हो गया होगा, नहीं हुआ है तो उसको कंटिन्यू करूंगा, हो गया है तो डेली बेसिस पे मैं उसको पढ़ना शुरू कर दूंगा। जैसे अनुज सर ने आज डेली पढ़ाया, मनीष सर ने आज डेली पढ़ाया, तो मैंने वो साथ साथ पढ़ लिया, जिससे बैकलॉग क्रिएट ना हो। और जब मैं मंथली उठा के पढ़ूंगा बाद में, तो इट विल बी लाइक अ रिविजन फॉर मी, मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर आ जाता है डे 2, डे 4, डे 6। इसमें मैं क्या करूंगा? शिफ्ट 1 ऑफ 3 आवर्स, इसमें मैं आरबीआई 247, पीआईबी 247 और स्पॉटलाइट की मंथली पीडीएफ्स कवर करूंगा, क्योंकि डे 1 में आई एम नॉट गिविंग इनफ टाइम टू इट, और इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली अपडेट भी होता है, तो इसलिए मैं 3 घंटा देना चाहूंगा। फर्स्ट डे पे मैंने 3 घंटा दिया था क्यूआरई की प्रैक्टिस को, सेकंड डे पे मैं 2 घंटे दे रहा हूं क्यूआरई के टेस्ट को। तो मैंने इस तरह से फ्लिप कर दिया, जिससे कि मेरा टाइम बच सके और मैं 3 घंटा यूज करूं करंट अफेयर्स के लिए। फर्स्ट डे पे मैंने फाइनेंस मैनेजमेंट ईएसआई का रिवीजन भी किया था, सेकंड डे में मुझे रिवीजन करने की जरूरत नहीं है सेकंड डे में, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूं। तो सेकंड डे में, सेकंड शिफ्ट में 2 घंटे में मैंने क्यूआरई का टेस्ट लिखा, 1 टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे। इससे इजीली महीने में 15 टेस्ट तो मैं लिख लूंगा। दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज माई स्पीड, इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस, इंक्रीज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मी। तो ये मेरा अगस्त तक का टाइम टेबल हो गया, बड़ा सिंपल सा। इसके थ्रू मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक ब्रॉड टाइम टेबल बना लिया, ब्रॉड स्टडी प्लान बना लिया कि मुझे ये करना है अगले 3 महीने एज अ स्टूडेंट। उसके बाद जितना टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा, दैट इज बेनिफिशियल फॉर मी, मैं उसको यूज करूंगा इन ऑर्डर टू रिवाइज द सेम थिंग मल्टीपल टाइम। जितना ज्यादा रिवाइज करूंगा, जितना ज्यादा टेस्ट लिखूंगा, ऑटोमेटिकली उतने ज्यादा नंबर मेरे बनेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब यू कैन डाउनलोड दिस टाइम टेबल फ्रॉम माई टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे मैंने शेयर कर दिया है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, नंबर 1। Secondly, supplement this timetable with the daily timetable that Manish sir created and gave it to you 2 months back. उस वीडियो का लिंक और उस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से यूज कर लो। इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि ये तो एक ब्रॉड टाइम टेबल मैंने दे दिया। उसके बाद फाइनेंस में डेली क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट में डेली क्या पढ़ना है, वो आपको उस टाइम टेबल से क्लियर हो जाएगा। कमेंट में सेक्शन में मुझे बताओ कि कैसा लगा ये टाइम टेबल, कैसी लगी मेरी अप्रोच अबाउट हाउ आई वुड रिएक्ट एज अ स्टूडेंट, whether you can relate with it or not, whether it makes sense to you or not, मुझे समझ आना चाहिए, so that I can create better content for you, I can teach you better, I can understand how you think as a student much better as well. I hope it was a useful session. I'll see you very soon again. Till then, all the best, take care, bye bye, Jai Hind.